Hey, good afternoon, everyone. Sorry for the delay. I was having some issues with the Zoom a bit. So let me know if I am clearly audible to you all. Okay, great. Thanks. So before we start, I just want to understand. I think most of you have already finished the classes and currently are in the process of maybe mock call or searching for job, I guess. So my name is Harsh Upadhyay and I've been working since last 4 years, around 4 years, and my expertise is on all the three clouds, primarily on AWS side with Kubernetes. And while learning this, there were multiple technology stack that I have went through. I think Docker, Kubernetes, Helm chart, Argo CD, Git, Jenkins, and some part of Ansible. So it's totally kind of a DevOps profile what currently I am into. And yeah, so means I have gone through number of use cases with these public cloud providers. So currently I work for a product based company and it basically deals in data governance and security. So the aim of, or what we can say, the product basically helps in simplifying the access, security, and governance capability of any data onto their client environment. Okay, so that client environment can either be uh, any public cloud. It can be GCP, it can be AWS, or it can be Azure. Apart from that, we also take care of the on-prem infrastructure, and somewhere or other, there are few Hadoop environment also running on MapR. So there also we need to deploy the product. So so I think company like this gives a very vast experience, and you have n number things to implement and n number things to learn. It's totally depend upon our approach and the opportunity, how we want to grab it and how we want to proceed further with it. Okay. So what today I'm targeting is maybe tomorrow I can walk you through the AWS use cases that I'm currently working on in the company or on the client side. But today I just want to understand the depth of AWS, what you all have currently, what you all have learned so far, and let's see how far we can take it. Okay. So just give me a minute. I'll share my screen and maybe we can quickly start. So instead of doing a round of PPT explaining you the theory, I think most of you are well aware of it. So we can directly proceed on the hands-on part, and there where whatever kind of question will arise or whatever the queries gets generated, we can have a discussion on that. Yeah, I'll go through the real-time use cases. See, yeah, so first let's understand the kind of knowledge you all have, and then we'll go with the use cases. So I've targeted only for the understanding part and your doubt clearance. And tomorrow I'll be going all through the use cases where I'll show you some complex infrastructure and the architectural diagrams. Uh, how does a product is how does a product gets deployed on AWS environment using different AWS services or technological stack. It can be big data, it can be Kubernetes, it can be a EMR. Okay. Okay, so we will be having last half an hour for question hours, question round. So let's preserve the questions uh, apart from AWS for that particular time. So just give me a minute. I can. mm, Let me bring up my console first.
Okay, so let me know once my screen is visible to you all. Great. Okay, so let's quickly proceed with few of the things. I think the basics. I'm assuming that you all are knowing the basics, especially on the core services, how to deploy an EC2 instance, how to use S3 with EC2, how to use the IAM role capabilities, and the VPC networking. So let's the very simple use case what we also use in our means this particular use case is or this particular module of the use case is fit in each and every project. Okay, well, this is the minimum bare requirement of anything. So what I'll do, let's start with EC2 only. I'll quickly. So this is okay. This is not the root account. This one is. So it's always preferable not to go with the root account that you all might be knowing, but since I've just created this particular account, so I'm just using that particular user. So there should be a user or uh, which has all the admin privileges, but it should not be a root user. Okay, because there are restrictions, there are certain policies which doesn't applies to the root user. Okay, so there won't be any kind of restrictions that you can apply to root user. So let me just create an instance first, then I can start over here. For the timing, I'm just keeping Amazon Linux as the default OS. Instance type, let it be T2 micro itself. Key pair, I can create a new one, or let me check if I already have. Okay, demos existing. Security group, I might be having this. Okay. So the storage type, just GP3 has came new. Previously, we were using GP2. Magnetic as standard also we can use over here just to save on the cost. But in the real time, or what we can say, in the project, we always prefer to go with GP2 or GP3. That is totally for the performance and the throughput, what it provides. Okay, so we need to take care of this. So client do wants to understand why GP2 or why GP3. Okay, why? So they need to understand each and every detail that you want to do. Okay, whatever you are recommending them, whatever you are suggesting them, they want to understand each and every detail, because ultimately it's their money what is getting put into. So we need to convince them why we need to uh, choose such type of configuration, so that it means it can be resilient, it can be based on the performance, it can be based on the security, anything. Okay, so but that thing needs to be convinced properly. That's the one thing. So maybe we need to do our homework very well before going to the client. Okay, now I'm just launching the instance. So I think it will hardly take a minute to get ready. So one thing over here is now, while launching EC2 instance, how many of you have tried providing any additional commands so that whenever that particular operating system comes up, it should that means it should able to pick up that particular configuration, or it should install few of the modules by default. Means suppose whenever the operating system or whenever this instance comes up, I want the operating system to be updated. Okay, so in that case, what can be done? So in that case, I think there was a I can just show you. I won't be launching anything. There is an option of adding user data. I might.
I, I'm guessing you might be knowing all those things. So here we just need to put those set of commands. So suppose if it's CentOS or Red Hat or Amazon Linux, we can simply put yum update -y with bin bash capability, and we can launch the instance. So as soon as this instance will come up, it will be having all the updated uh, packages for that particular operating system. Okay. So it's still initializing. So let me show you something till the point. Okay, so this is just an overview of a basic organization, or whenever we create an account in AWS, how does it looks like? Okay. Again, let me. I think it's getting difficult for me to see. Okay, let me explain it over here. So is it visible? Is the font size good for you all? Anyone have any issue in viewing it? Let me know. Okay, great. Okay, see, the launch of that EC2 instance, that what I did right now is what we can say. It's not being done anywhere in organization or in any kind of project like that. We never use Wizard to launch an EC2 instance. We always prefer Terraform infrastructure as a code. It can be either a CloudFormation template, it can be a Terraform module, or it can be a Jenkins job, or it can be from command line interface. Okay. So if we already have a ready command, we can go with the CLI approach that most of us used to do if we need to launch one or two EC2 instance with some default settings. Uh, if we want to make configurational changes, uh, suppose in pre-prod environment or prod or a staging environment, we always go with Terraform modules. We always launch EC2 instances so that we can track the state of the instances. Okay. And in some cases, we also use Jenkins jobs to launch an EC2 instance. So I think these are the few things that you can also try at your end. Okay. So uh, this is a simple slide of AWS organization. So what does AWS organization do? It helps in creating you the complete infrastructure within AWS based on the user and the groups. Okay, so whatever the number of users and groups you want to create, and what what kind of policies or what kind of permissions you want to provide them is being can be managed by AWS organization. Okay, so here if you see, here we are using the AWS organization. Okay, this is a symbol of that. So here we are enabling AWS SSO using on-prem directory. So this can be anything. We can use AD, we can use LDAP, we can use any other mechanism also. Okay, so once we are into this AWS organization, this pink boundary, what you are seeing, this is the complete AWS organization. Within this, we are creating three different one account, that is a management account. So this is basically the root account, what we can say. Okay, this is the root user. And this is the OU, that is the organizational unit. So organizational unit is nothing but a group of uh, users or a group of accounts. Okay. So it means suppose you have 100 different AWS account and you want to segregate those 100 different AWS account based on the departments. So you create OUs or organizational units for each and every department. Okay. So that's how it works. So here we have created an OU for production. Similarly, here we have created an OU within which we have development and testing both. Okay. So here we see we do have service control policies. So what is service control policy? This is also similar to an IAM policy, but it works at the account level.
Okay, not at the user or group level, but it works at the account level. So if you need to provide permission to any group of users that is lying within a particular account, then we use service control policies. And the inheritance of this policy is always from top to bottom. By default, as you all might be knowing, that it always explicitly denies. Okay, whenever you make any API request or whenever you want to use any AWS services, it will always deny until unless there is any policy to allow it. And deny always takes precedence then allow. So that also depends whether it is explicit deny or implicit. Okay, we'll be going through that flow chart after that, but for the timing, just I wanted to let you know that this service control policy is something which we used to configure at the account level. Okay, and this, so here it is just showing that it can control tagging and the available API actions. Yeah, so CloudTrail, as you might be knowing, so CloudTrail is just used for getting all the logs that is being generated by the EC2 instances or at the application level. Accordingly, what the way we have configured it totally depends on that. Okay, so we have a management. Under management, we have production, development, and test. So whatever the, suppose we at this particular level, we have implemented service control policies. Okay, so it will flow to production, development, and test also. The same policies will be applicable to all these three departments. So first thing is that now suppose if I need to provide any kind of restriction to the development, but not to the production and test, then what we'll do? In that case, we will create an explicit deny policy for this development environment. Okay, so that can also be a service control policy. So that deny will take the precedence over here. And based on the ARN or based on some tagging mechanism for this particular development, what we can say department or branch, we can use the service control policy. The thing is that we want to let know the service control policy that it needs to be applicable only to the development department, not to the test or production. Okay, so there should be some mechanism to filter it out. So that we use either by the tags or either by the, what we can say, ARN of that particular group of users. Yeah, so I think let's go back to our EC2 instance. This might be ready. Okay, so okay, so right now, see, I can't log in via PuTTY because I have restrictions since this is my company's laptop. I can't download and install anything. I need to have a proper set of authorization. So just to avoid that, I'm just connecting via AWS console itself. Let's see how it goes. Okay, so what we can do next is, okay, so it has connected successfully. Now suppose this might be empty, not an issue. Okay, so currently this particular instance has been launched in a public IP, which is not recommended, but this is just for the demo purpose. So I'm using it, but you all might be knowing, see, we can create a Bastion host or we can create a session manager and we can launch this instance into a private subnet. But again, we'll be needing some mechanism to go inside this network and to get access to this particular instance. Okay, so in that case, again, we might be needing two instances, one of Windows and one of Linux. Okay, just to avoid that, I have created it with public IP for the time being. Okay, so suppose I need to see from here which all buckets are existing in S3. Okay, so I'm simply just trying to list down all the buckets present in S3. Within this account, let's see what it gives.
So let me ask first, any guesses? What should be the output of that particular command? The command that I ran, what should be the output? Will it provide me the list of the bucket, or will it throw any kind of error? Okay, okay, great. So yeah, let's check. So it has thrown me an error, unable to locate credentials. You can configure credentials by running AWS configure. So as a next step, it is asking me to provide some authentication mechanism or authorization to that S3 service so that it can list down all the buckets. Now here two things comes into picture. Okay. So the very first thing, if I run this AWS configure command, it will ask me secret key and access key ID. Okay. But if I provide this secret key and access key ID, it's a kind of what we can say, it's not recommended, it's not one of the best practice. Then what is the second approach that I can go for? I don't want secret key or access key ID. So I want to, if any user logs into this particular instance, he or she should have access to list on all the S3 bucket. In that case, what we can do? Okay, great. So we will be attaching a role to it. So let's attach a role. So for that, what we will do, we just need to check if there is any existing IAM role, or we can configure it. It will hardly take 2 minutes. So what we are going to do, we are just creating a role, and the role is related to an AWS service, and it is for an EC2 instance. So currently I'm just providing full access to the S3 service. And test for RBAC will do. I'll let you know what exactly this RBAC and ABAC stands for and how does it plays an important role in while defining the policies. Okay, so I think the policy has been, the role has been successfully created. And if we click on this role, we have seen that this policy is existing where it has all, it has full access to the S3 service. Now what next step we need to do? We need to attach this particular role to the EC2 instance. So here next question is, what should be the state of the EC2 instance when we are trying to attach this role? Can I attach this role in a running state, or do I need to stop the instance first? Okay, one is saying stop running. Yes, great. Let's see. So let's try with the running first. Okay, so since the instance is in running state, what I'll do, I'll simply go to actions. I think under security, we do have, yeah, modify IAM role, choose IAM role. We have test for RBAC, and I'll simply update the IAM role. So we don't need to stop the instance. Okay, that's the one point I think some of you got cleared with. Now, since we have attached the instance, let's go back to the terminal and let's check again whether this command gets executed or not. So command got executed successfully, but the thing is that there is
no S3 bucket present. That's why it is not listing anything. Okay, so maybe I can quickly create one bucket because we will be using it for further experiment. So let me create a bucket. I'm just naming it as test bucket, creating in the same region. So see, S3 is a global service, but the bucket needs to be region specific. Okay, so yeah, let's all public access be blocked. I'm not enabling versioning, not adding any tags, not enabling the encryption. It's the by default one. Let me simply test bucket. So it is not taking. Mm, Okay, so I think the bucket got created successfully, and let's see. Now it will be listing it. Okay, so now the next thing is where it is. This one. I'm creating one more bucket. Demo bucket. Let me see whether it will take it or not. The thing is that the name of the bucket should be globally unique, okay, across the region. So that's why it has to do nothing with the list of the bucket that is present in your account. It will be checking for it across all the region. It should be unique. Okay. So now I've created two buckets. Okay. And let me quickly check over here. So currently I have access to both the buckets, that is 2K23 and 2K24. Now I want to restrict the access for 2K23. I want that whenever I run this AWS S3 ls command, it should only show me 2K24. Okay, and in any case, suppose I run ls command over this particular bucket. Okay. It should not get executed. It should throw me an error. So I want to know from you all what should be my approach, or what should be the approach over here. What is the preferable approach where I can restrict only one bucket to not have access, and the other, all the buckets should have access for this particular user or instance. Yeah, policy will be there, but where that policy needs to be applied, or public access is disabled. Right now we are within the subnet, so it has to do nothing with the public access. See, we are already using resource-based policies. Yes, one is right. I think one answer I got right. That is, we need to apply bucket policy over here. Okay, let me show you. So what I'll be doing, I'll just go to this particular bucket within permissions, I guess. No, properties. Let me see where it is. Not here. Yeah, over here. So we have a bucket policy. Okay, and what we need to do, we need to add the policy. So let me just quickly find out. I might be having a template somewhere or other. Yeah. Okay, so what this policy is doing, it is denying access for all the users. Okay. Any user or any kind of resource won't be able to access this particular bucket. Any kind of AWS service won't be able to reach out to this bucket for
uploading or getting any kind of objects within it. Okay, let's see if this works. Demo, I think the bucket name is test, which what? Where are we? Demo bucket 2T2. Okay, this is fine, I guess. Let's save this. Let's try it again. Great. Because we are within the bucket, that's why it is throwing the error. So over here only we can see that the access has been revoked. Okay, let's try the same thing from CLI. It is giving that we don't have access to this bucket. Okay, so let's try for 2.4. 2.4 is having the access. Okay, so this is the one thing. Whenever we apply any kind of IAM policy, we need to fine grain it to the maximum depth we can go, especially if it is a financial domain or insurance company or what we can say, healthcare, pharmaceutical. In all those, the compliances are very strict and we need to adhere each and every point. There is a list of best practices, there is a list of security guidelines or protocols that needs to be followed. Okay, whether to, and they are very strict with it. We can't modify a single point over there, or we can't have discussion on that. So this was the one thing that I wanted to show. Now the second thing is, let's go back to our S3 bucket. Okay, for the time being, I'm just removing those permissions. And I'll be uploading an object within this bucket. Let's see if I have anything to upload. Okay, let's use this demo text. Okay, now the second thing is, whenever some kind of upload or delete or fetch or list, any kind of operation happens on S3 bucket, I should get a notification. Okay, I should get an email that following object is being uploaded to your S3 bucket, or following object is being uploaded to this particular S3 bucket. Similarly for all kind of operations, whatever kind of operation happens in this. So what will be the approach, or what should I do next to create such kind of configuration? Let's see. So how many of you have tried SNS? Yeah, we do have. I think, let me check, because so see, we do have option over here that is event notification. Okay. So what we need to do, event means any kind of event related to upload, put, get, fetch, list, delete. All those are events that has been counted as an API call. Okay. API basically stands for application peripheral interface kind of thing. So this is basically a, what we can say, a URL that hits in the backend to fetch any kind of data or to delete or to put any kind of data. Okay, maybe we can discuss a bit on the API maybe some other time, but for the timing, just try to understand that there is a list, there are sets of API call which runs in the background for any kind of applications. Okay, it's not for AWS, for any kind of product or any kind of application.
there are always set of API calls that runs in the background to perform the operation or to fulfill the operations. Okay. Okay, so let's come to the point. This is the event notification, and it will notify if any kind of event happens to the S3 bucket. So what we'll be doing over here, we just need to create an event notification. Let's see how it goes. So suppose I need to create an event where I need to find if any kind of upload happens to my S3 bucket, then I should get notified. Okay, so in that case, upload object, I'm just providing it a name. Okay, I'm currently selecting all object create event, means any kind of put, post, copy, or multi-part upload happens on this particular bucket, I should be notified. Similarly, we can also enable all these kind of operations: removal, restore, ACL, tagging, redundancy, replication. Okay. Now over here, the destination is three. Either we can trigger a Lambda function, which is a serverless computing. Either we can define an SNS topic, or we can define an SQS queue, which is similar to a Kafka. Okay. So let's try with the SNS topic first. So it is asking, specify the topic that you want to configure with. So here we see we don't have any SNS topic yet. So what we will be doing, let's go to SNS first and let's create a topic. See, this is one of the basic alert that is present in each and every project. Okay. We have SNS, SQS, SES. Yeah, these are the services that is these are the services that is present for AWS, and that is being leveraged as per the requirement and the business use cases. Okay, so I'm just trying to create a topic, so I'll be just giving it a name. I'll be giving it the same name: object upload S3, or let's do it like this: object upload to S3, and let's simply create a topic. If we encounter any kind of error, then we will be looking after it. Now we need to create a subscription over here. So I'll be creating a subscription. So see, this is the default ARN that is coming for the topic that we just created. Okay. Now, since there is only one topic, so it is picking up that particular, or else here will be the list and we need to select which ARN to be picked up. Now the protocol, type of endpoint to subscribe, leave it as it is, no need. I'll simply create subscription. Why it is saying that? Enable availability. I think, okay, I need to check on, wait, this one is already existing. Okay, I think instead of going with FIFO, let me go with the standard approach. Let me delete its topic once. Okay. Let me recreate a topic, and now this time I'll select a standard, upload object to S3, and I'll create this topic. Create subscription. Yeah, now it is coming fine. So over here, I'm just selecting the email, and
Mm, 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 mm. Okay, let me see which email ID I can use over here. I guess let me use it. Lecture 223 at the rate gmail.com. So this is the endpoint. Any kind of event or any kind of notification will be sent out to this particular mail. Okay, I'm just creating a subscription over here. So it is saying that pending confirmation. So for this, we need to log into our mail and we need to confirm the subscription over there. So let me quickly do that. Demo.lecture 223. I hope so. Password is yes. Password is correct. Okay. So here you can see I got a mail saying that asking to confirm the subscription. I'm just confirming the subscription. Okay. So this one is fine. And let me go back to SNS. Let me try to refresh this. I'm doing a hard refresh. The status is confirmed for this particular subscription. Let's go back to the topic. And this is the topic that we just created. So what we'll be doing, we'll now go back to the S3. And here, okay, I may need to refresh it. Let's do it quickly. So upload object, all object create event, SNS topic. Either we can provide ARN or the topic name directly. So I'm just selecting the topic name and I'm saving the changes. So it has thrown an error. API response and unexpected error occurred. Unable to validate the following destination configurations. Okay. So I think this was an expected error. So now I need to understand over here what you guys think on this. What is the reason for this error? Why this error is coming? Quickly in chat. ARN restriction. So restriction is there, but at where that restriction is existing? Permission definitely somewhere or other it is not able to reach. The S3 is not able to reach to the SNS topic. Policy IAM SNS. See, wherever permission is there, IAM is the only one which is in picture. Okay. Bucket policy, no. Bucket policy has to do nothing with this. SNS, yes. Yeah. So the restriction is lying on the SNS side. Okay. So that we need to quickly check. Let's see. So I'm just clicking on that topic, and now if I go to this access policy under the topic, I see here is the default that is being uploaded. Okay, so what I'll be doing, I'll simply try to edit this access policy. So before that, we'll be needing a template that has been provided by AWS, I guess, and we can leverage that template to create the policy. So let's see what has been given in this talk. So this is basically for granting permission to publish event notification to the destination. I'm just pasting this in chat also in case you guys want.
Okay. So if I scroll down here, we have an IAM policy for the destination SNS topic. Okay. So I'm simply trying to grab this template, or let me use this copy button, and I'll go to this where SNS. Mhm. So this is the default one that is existing. So what I'll do, I'll just simply remove this complete part, and I'll be pasting the one that I copied from the document. And here there are a few parameters that we need to provide. Okay. So let's see. ID. So here it is asking for the ID. So this ID is nothing but the SNS topic name that on which we are configuring it. So that I can simply copy it from here itself, and I'll be pasting it over here. So this SID, this you can, if you want, you can write anything, or else you can leave it blank also. That is not an issue. It's just an example. It's a kind of naming convention, what we can say. Okay, the action, what it will do, it will publish to that particular topic that we are expecting. And resource, so here it is expecting SNS topic ARN. We need to copy the, so what I'll do, I'll open one more tab of this SNS, and let's go back to this, and here is the ARN of the topic that I copied, and it needs to be pasted over here under the resource. Then we have condition ARN like, so here it is trying to match the condition where we need to provide the ARN of the bucket from which, or the bucket on which, if any kind of event happens, then this particular topic should get noticed, or the event should get published to this particular topic. Okay, so let me quickly go and grab the ARN also for this also. Let me open one more tab for S3 bucket also. So under properties here, this is the ARN for the bucket. So I just need to copy it, and I'll be pasting it over here. You can use multiple bucket names over here if you want to use a single topic. Okay. But it is not recommended. The thing is that. So this string equal bucket owner account ID, I can show you, but this is an optional component. You don't need to configure it in depth. Okay. So where? I think it will be under permission itself. Yeah. So see, this one is the bucket owner account ID. Okay. Under access control list. This we can use over here, over there. But for the timing, since this is an optional component, I'm leaving it like this only. So let's see how it goes. Let's save the changes. Before saving, let's review it once, or else upload. We have provided the ID. Okay, ARN has been provided. Bucket ARN has been provided. Okay, let's try to save this. Let's see if this works. So change is successful, means it has picked up the policy successfully. And now let's go back to our S3 bucket. Let's try to save it again. Again, the same error. Now take the guesses.
Now where it is stucking, we have provided the bucket ARM, we have provided the proper action. Let me show you the access policy again, or let it be in edit stage only, I think. Okay, so here we have provided this SNS topic name. Here we have provided the SNS, what we can say, ARN. This is the bucket ARN. Now tell me why, what can be the reason why that error is still coming? Any guess? Any guess will work. I know it's difficult to guess that particular thing, but any guesses will work. The issue is lying somewhere in front of you itself. We had restricted the bucket. No, I have removed the deny policy. Currently, the restriction account ID, owner ID, S3 endpoint create करना पड़ेगा. No, we don't need to do anything like that. चलो ठीक है, हिंदी में बोलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. Enter SNS topic. Where? कहाँ पे SNS topic डालना है हमें? Okay, चलो see, I have seen all of your guesses. What we can do, यहाँ पे दो चीज़ है. या तो तुम bucket owner ID यहाँ पे प्रोवाइड कर दो, ठीक है, या तो तुम इस कंडीशन को यहाँ से हटा दो, क्योंकि इसको यहाँ पे इसका वैल्यू नहीं मिल रहा है और जिसकी वजह से वो इशू फेंक रहा है. ठीक है, इनिशियली ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, बट ये करने के बाद फिर धीरे धीरे पता रहता है कि क्या है इसका आरसी है क्या एग्जैक्टली. तो अभी एक बार इससे ऐसे ट्राई मार के देखते हैं. तो हमने क्या किया, खाली वहां से ओनर आईडी हटा दिया. नाउ लेट्स ट्राई टू सेव द चेंजेस. Okay, so the save is successful. Okay, let's scroll down where it is. तो इवेंट नोटिफिकेशन के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक इवेंट बना हुआ है अपलोड ऑब्जेक्ट के नाम से, एंड दिस इज लिंक टू दिस पर्टिकुलर एसएनएस टॉपिक. अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये सीधे हमें एसएनएस पेज पे ले जाएगा. ठीक है, ओवर हियर. नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू टेस्ट वेदर दिस इज वर्किंग और नॉट. तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक फाइल अपलोड करके देखते हैं, बट उससे पहले मेरे को चेक करने दो फाइल है भी कि नहीं कहीं पे. चलो एक काम करते हैं, या तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं और यहीं से एक अपलोड कर देते हैं. VI demo2 के नाम से करते हैं. चलो ठीक है, इसको सेव किया जाए और इसको हम अपलोड करते हैं. तो हमने इवेंट नोटिफिकेशन 2 के 3 वाले बकेट पे सेट किया था. CP demo2. So upload is successful. Okay, let's go back to the S3 bucket. अभी हम इसको सॉफ्ट रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे फाइल मिल जाएगा. ठीक है, demo2 करके फाइल यहाँ पे आ गया. नाउ लेट्स सी हमें कोई नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया. ओके, सो हमें एक नोटिफिकेशन आया. दिस इज द वन व्हाट वी गॉट. ओके, इसको थोड़ा सा मुश्किल होगा पढ़ने में, बट एक काम करते हैं, इसके लिए हम इसका जेसन वैलिडेटर खोलते हैं. जो आउटपुट आया है वो जेसन फॉर्मेट में है, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे जेसन फॉर्मेटर ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो उसे रीडेबल फॉर्मेट में बना देते हैं. ठीक है, एक था तुम्हारा ये जेसन फॉर्मेटर .io. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ईमेल पे आया था हम उसे पेस्ट करते हैं कंटेंट. ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट करके इधर हमें
ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में डाल देता है। पढ़ने का हम ये भी पढ़ सकते हैं, बट इसको पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अगर आदत है पढ़ने का तो फिर इसमें से भी हम चीज़ें निकाल सकते हैं तुरंत। सो हियर वी कैन सी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बकेट का नाम इसने दिया है। ठीक है, प्रिंसिपल आईडी मतलब यूजर आईडी, ARN ऑफ द बकेट, और यहाँ पे फाइल नेम। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपलोड हुआ है। सो वी गॉट द नोटिफिकेशन। ओके, सो लेट मी नो इफ एनी क्वेश्चन सो फार। इस चीज पे या इस पॉइंट तक कोई क्वेश्चन है तो बताओ मेरे को, मैं इस पे क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। देखो, क्या जेसन फॉर्मेट, देखो जेसन फॉर्मेट क्या है तुम्हारा, एक जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन करके बोलते हैं उसको कुछ। और जैसे हमारा CSV फाइल होता है या एक्सेल फाइल होता है, हर एक फाइल का अपना अपना फॉर्मेट होता है। पार्के फाइल होता है, ठीक है, वारसी फाइल होता है। वैसे हमारा जेसन फाइल होता है, तो इट्स अ काइंड ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड फाइल। ठीक है, जिससे हम मतलब वो एक लिखने का फॉर्मेट है और कुछ नहीं, एक सिंटैक्स है एक टाइप का। तो AWS में जेसन फॉर्मेट इज द डिफॉल्ट वन। तो जेसन और यामल ये हम दोनों यूज कर सकते हैं। तो जेसन टू यामल या यामल टू जेसन करके हम कर सकते हैं, जो भी हमारे लिए प्रेफरेबल है। बाय डिफॉल्ट क्लाउड फॉर्मेशन हो गया या फिर AWS में IAM के पॉलिसीज हो गए, सारे के सारे जेसन फॉर्मेट में ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिसी में क्या चेंज। पॉलिसी में हमने ऑब्जेक्ट ओनर का आईडी नहीं डाला था, उसको हमने हटा दिया। तो वो हटाने के बाद फिर हमारा एरर रिजॉल्व हो गया। ऑल्टरनेटिव यही है कि हमें अकाउंट ओनर आईडी प्रोवाइड करना पड़ेगा। वहाँ पे अकाउंट ओनर आईडी दे दोगे तो फिर वो रिजॉल्व हो जाएगा इशू। ठीक है, बट वो ऑप्शनल है। ठीक है, इन जनरल हम अकाउंट ओनर आईडी जल्दी प्रोवाइड इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है और एक्सपोज होता है। इसलिए अगर वो ज़रूरत नहीं हो तो हम उसको अवॉइड ही करते हैं ज़्यादातर। देखो, ACL इज बेसिकली रीड राइट परमिशन ऑन एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, बकेट पॉलिसी क्या होगा, बकेट तुम्हारे बकेट पे अप्लाई होगा, ACLs तुम्हारे उसके ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होते हैं। सो बोथ आर डिफरेंट थिंग। व्हाई वी यूज दिस, विच वन, आई एम नॉट गेटिंग। बकेट पॉलिसी ACL पूछ रहे हो कि SNS का पूछ रहे हो? बेसिक यूज केस है नोटिफिकेशन का। देखो, जब भी हम हमारे पास एक अलर्ट आ जाएगा, तो रियल टाइम में क्या होता है कि बहुत सारे n नंबर ऑफ या 1000 S3 बकेट्स रहेंगे। ठीक है, अब उन S3 बकेट पे मतलब मिनट के हिसाब से डेटा आ रहा है और जा रहा है। ठीक है, अगर कोई ऐसा डेटा कंपनी है या फिर वहाँ पे GB में ट्रांजैक्शन हो रहा है ऑन आर्ली बेसिस, व्हाट वी कैन से, तो बहुत सारे डेटा आते जाते हैं। तो जो इनपुट और आउटपुट जनरेट हो रहा है, दैट नीड्स टू बी ट्रैक्ड प्रॉपर्ली, देयर शुड बी सम अलर्टिंग मैकेनिज्म दैट शुड बी इन प्लेस। ठीक है, अब सारे डेटा जो तुम्हारे इनपुट की तरह आ रहे हैं, या द ऑब्जेक्ट दैट इज गेटिंग अपलोडेड टू एनी S3 बकेट, उन सबको ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हम खाली जो ऑब्जेक्ट प्रॉपरली अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट में कहीं एरर आता है अपलोड होने में, तो वैसे पे हम नोटिफिकेशन जनरेट करवाते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, तो जैसा कि हमने देखा, ये देखो, जैसे ये जेसन फॉर्मेट, ये जो हमारा आउटपुट आया, हम क्या कर सकते हैं, अब इस आउटपुट को लेंगे और इसको एक डैशबोर्ड में डालेंगे। ठीक है, डैशबोर्ड मींस वो एक ग्राफाना का डैशबोर्ड हो सकता है या प्रोमीथियस का डैशबोर्ड हो सकता है। और इस पे हम मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। मैट्रिक्स इन द सेंस, सपोज हमें पता करना है इसमें से कि कॉन्फ़िगरेशन आईडी क्या है।
ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आईडी के बेसिस पे हमें फिल्टरिंग करनी है कि एन नंबर ऑफ हमारे पास अलर्ट्स आ गए और उनमें से कॉन्फ़िगरेशन आईडी के बेस पे हमें सेग्रीगेट करना है। तो वहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन आईडी के रेस्पेक्ट में मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे और अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे डैशबोर्ड में उसका ग्राफ बना के देगा हमें। ठीक है, तो वो काम हमारा नहीं है। ठीक है, वो काम के लिए अलग से बीए और बीआई वाली टीम बैठे रहते हैं, डेटा वाली टीम रहती है, वो लोग करते हैं। हमारा काम खाली खाली रहता है कि उन्हें ये डेटा पहुंचा के दे दिया जाए। ठीक है, अगर डेवॉप्स के कोई बंदे हैं तो वो एक पाइपलाइन क्रिएट कर देते हैं कि एज सुन एज दिस आउटपुट गेट्स जनरेटेड, जैसे ही आउटपुट जनरेट होगा वैसे ही एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हम उसे कॉपी करके रख देते हैं, या फिर हम उसको फाइल में कॉपी करेंगे और फाइल को हम वापस से अपलोड कर देंगे किसी और बकेट में या फिर कोई और डेस्टिनेशन पे। ठीक है, ये एक व्हाट वी कैन से मोस्ट कॉमनली यूज केस है जो बहुत से प्रोजेक्ट में यूज किए जाते हैं। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट नोटिफिकेशन। ओके, नाउ लेट्स कम टू S3 पार्ट। तो ये तो एक चीज था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, सपोज दो अलग अलग बकेट हैं। ठीक है, एक बकेट तुम्हारा यूएस ईस्ट वन में और एक बकेट तुम्हारा यूएस वेस्ट वन में। ये भी यूज केस है जो हमने अपने प्रोजेक्ट्स में भी यूज किए हैं, मोस्ट कॉमनली यूज होता है ये चीज। अब वॉट एवर डेटा या कोई भी डेटा जो या कोई भी ऑब्जेक्ट जो यूएस ईस्ट वन के बकेट में कॉपी हो रहा है, हम चाहते हैं सेम ऑब्जेक्ट शुड गेट कॉपीड टू द अदर बकेट ऑल्सो। ठीक है, कि अगर हम सपोज ये मान के चलते हैं कि देयर इज अ बकेट ए एंड बकेट बी, so whatever object that is getting uploaded to bucket A, it should automatically get copied to bucket B. Okay, in that case what should be the approach or what we can do? ओके, सो ये चीजें, हाँ, तो वहां पे दो चीजें आती है, या तो हम सिंक कर सकते हैं या तो हम क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, द बेस्ट अप्रोच इज टू गो विद द क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन। ओके, so for any bucket we can get the cross region replication over here, so we just need to define the replication rule और उसके हिसाब से हम रेप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का यूज केस है इसमें। सिंक के साथ इशू क्या है ना कि तुमको सिंक कमांड बार बार चलाने पड़ेंगे। मतलब या तो तुम एक क्रॉन जॉब सेट कर दो एक सिंक कमांड लिख के, और इट विल रन एट रेगुलर इंटरवल। इट कैन बी 15 मिनट्स 1 आवर डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द डेटा। और रेप्लिकेशन के साथ क्या है कि रेप्लिकेशन एक बार हमने सेट कर दिया वो ऑटोमेटिकली उस पर करते रहेगा। सो और रेप्लिकेशन पे हम फिल्टर भी सेट कर सकते हैं। वी कैन यूज प्रीफिक्स। ओके, वी कैन यूज एनी, we can restrict it to any particular kind of file extensions. Okay, accordingly we can copy the data between two buckets. So एक वो दूसरा यूज केस हो जाता है। ठीक। अब इसमें एक चीज और आता है। एक मिनट, इसको बड़ा करता मैं। ये जब हम IAM पॉलिसी अप्लाई करते हैं उस समय इनहेरिटेंस या प्रायोरिटी कैसे सेट होता है? ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने बताया था कि किसी भी पॉलिसी के लिए या फिर किसी भी रिसोर्स के लिए डिनाई होता है। ठीक है, डिसीजन ऑलवेज स्टार्ट विद अ डिनाई। सो व्हेनेवर a resource or a user or a particular group or any kind of application within a resource or an EC2 instance is being created, by default उसको किसी और AWS सर्विसेज से बात करने की परमिशन नहीं होती है। ठीक है, लेमैन लैंग्वेज में अगर हम समझे तो। सो by default it always starts with a deny, and then the very first thing it will check is the organizational service control policies। तो जो मैंने बोला था कि सर्विस कंट्रोल पॉलिसीज वो होते हैं जो हम अकाउंट लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं। सॉरी, या सो सर्विस कंट्रोल पॉलिसीज वो होते हैं जो हम अकाउंट लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले वो सर्विस कंट्रोल पॉलिसी चेक करेगा कि इस अकाउंट लेवल पे
क्या क्या परमिशन है। अगर उसको परमिशन मिलता है कि देखता है कि हाँ ठीक है इस पर्टिकुलर अकाउंट पे उसको परमिशन है, तो फिर वो आगे जाता है, फिर वो चेक करेगा रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। ठीक है, तो अगेन रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी में वो चेक करेगा कि अलाउ है कि डिनाई है। अगर अलाउ है तो ठीक है वो उसको अलाउ कर देगा, अगर डिनाई है तो फिर वो आगे जाएगा, देन इट विल चेक फॉर द परमिशन बाउंड्री। ओके, परमिशन बाउंड्री इज जनरली सेट एट यूजर और ग्रुप लेवल। ठीक, then it will check for the session policies. Okay, so is the principal a session assumed using a policy? Principal मतलब यहाँ पे हम यूजर बोल रहे हैं, तो यूजर तुम्हारे मतलब ऐसा हो सकता है कि यूजर AWS अकाउंट के बाहर का मेंबर हो, या फिर यूजर तुम्हारा किसी और AWS अकाउंट का मेंबर हो। तो वो पहले ये चेक करेगा कि यूजर के पास अज्यूम रोल है कि नहीं है, अगर वो बाहर से आ रहा है या फिर अगर वो किसी और रीजन का है। ठीक है, अगर अज्यूम रोल है तो फिर वो आगे जाएगा, देन इट विल चेक फॉर द आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसीज। सो दिस इज द प्रायोरिटी हाउ IAM policies work. Okay, so this is the one thing that needs to be always keep in mind while creating any kind of IAM policy for any kind of AWS services. Now तो इसके बाद हम एक बार को ये आर बैक तो हमने देखा। देखो अभी जो हमने किया दैट वाज द रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ओके, जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बना सकते हैं या डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स बना सकते हैं, और हर एक यूजर के लिए स्पेसिफिक सेट ऑफ परमिशन दे सकते हैं जो केवल उसी पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो मोस्टली हमारा बेस्ट प्रैक्टिस में क्या आता है कि हम यूजर्स को एक ग्रुप में डालते हैं और ग्रुप के ऊपर परमिशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, वी नेवर अटैच डायरेक्ट पॉलिसीज और रोल्स टू अ पर्टिकुलर यूजर। ठीक है, इट इज ऑलवेज बीइंग अटैच्ड टू अ ग्रुप। नाउ सो सी दैट परमिशन कैन ऑल्सो बी कॉपीड फ्रॉम अदर ग्रुप। मतलब सपोज करो एडमिन ग्रुप, डेवलपमेंट ग्रुप और ऑपरेशंस ग्रुप है, तो कुछ ऐसे परमिशंस हैं जो डेवलपमेंट ग्रुप के ऑपरेशन ग्रुप को भी होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनके परमिशंस को इनहेरिट कर सकते हैं या इनके परमिशंस को हम सीधे कॉपी कर सकते हैं, एक टाइप से क्लोनिंग कर सकते हैं हम। और उस क्लोनिंग करने के बाद फिर बाकी के जो परमिशंस हैं हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा टाइम बचाता है और कुछ नहीं। So these are the by default policies that is existing on AWS for RBAC. Okay, ये सब तुम लोगों को देखा हुआ होगा, मैं मान के चलो, नहीं हो तो एक बार चेक करना, IAM में मिल जाएंगे ये सब चीजें। ठीक है, वैसे जरूरत पड़ता नहीं है इतना। द नेक्स्ट थिंग इज ABAC। ठीक है, ये चीज एक खाली थोड़ा समझ लो, अगर टाइम मिले तो ये चीज एक बार टास्क करके देखना तुम लोग अपने एंड पे। ठीक है, इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, एक यूजर है, ठीक है, डेव नाम का एक यूजर है। ये जब यूजर हमने क्रिएट किया उस समय इस यूजर के साथ हमने टैग अटैच किया। टैग क्या है? टैग इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ मेटा डेटा। मतलब एक टाइप से हम उसका नेमिंग कन्वेंशन कर रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं कि भैया तुम इस पर्टिकुलर सोसाइटी में इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में रहते हो। ठीक है, तो वो एक तरीके का टैग हो गया। तो यहाँ पे हम इसको डिपार्टमेंट और DB एडमिन के नाम से टैग कर रहे हैं। ठीक है, तुम लोग को जो रखना है तो अपने तुम लोग अपने हिसाब से इसको रख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वी आर देर आर 2 RDS इंस्टेंसेस। ठीक है, 2 RDS के डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट है। तो एक RDS पे टैग है इन्वायरमेंट प्रोडक्शन और दूसरे RDS पे टैग है इन्वायरमेंट डेवलपमेंट। हम चाहते हैं कि डेव यूजर को खाली प्रोडक्शन इन्वायरमेंट को रीबूट करने का एक्सेस हो। ठीक है, या फिर यहाँ पे जो भी हमने परमिशन मेंशन किया है, रीबूट, स्टार्ट, स्टॉप, ये 3 परमिशन खाली प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे अप्लाई हो, नॉट ऑन दी डेवलपमेंट एनवायरमेंट। ठीक है, दिस थिंग नीड्स टू बी ट्राइड। तो व्हाट यहाँ पे बेसिक क्या करना है, कुछ नहीं, एक पॉलिसी बनाना है, उस पॉलिसी के अंदर हमें टैग्स डिफाइन करने हैं। वंस दैट पॉलिसी इज बीन क्रिएटेड वी नीड टू असाइन दैट पॉलिसी टू अ रोल। दैट रोल विल बी अटैच्ड टू अ ग्रुप, एंड विद इन दैट ग्रुप दिस पर्टिकुलर डेव यूजर नीड्स टू बी प्रेजेंट। ठीक है, तो पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी को रोल पे अटैच करेंगे, रोल को हम ग्रुप में अटैच करेंगे और उस ग्रुप के साथ इस यूजर को जोड़ देंगे। या फिर जिस भी ग्रुप में ये यूजर है उस ग्रुप में हम वो पर्टिकुलर रोल अटैच कर देंगे। और उसको एक बार टेस्ट करके देखना, मेरे को कल बताना कि वो चीज़ हुआ कि नहीं हुआ।
ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट उसका सिंटैक्स है, इसका डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, ऐसे सर्च करोगे एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मिल जाएगा तुम्हें AWS पे। उसको एक चीज ट्राई करके देखना तुम लोग। तो ये चीज भी हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं कि देर आर, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, और विद इन दैट डिपार्टमेंट ऑल्सो कहीं पे हम सेग्रीगेट करके एक टाइप से व्हाट वी कैन से सब डिपार्टमेंट टाइप का काइंड ऑफ थिंग हम बना देते हैं कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में 4 टीम है, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में 5 टीम है। तो उनको सेग्रीगेट करने के लिए या उनको अलग अलग रखने के लिए हम वहाँ पे टैग्स असाइन करते हैं। और इसलिए जब फिर बिलिंग की बात आती है, जब एंड ऑफ द मंथ हमें AWS का बिल चेक करना रहता है, तो हम क्या करते हैं, उन टैग्स को यूज करते हैं। या फिर हमें उन पर्टिकुलर टीम्स पे कुछ परमिशन सेट करना रहता है, तो हम उन टैग्स को यूज करते हैं। तो जब हम टैग्स को यूज करके किसी भी तरीके का एक्सेस कंट्रोल करते हैं या फिर किसी भी तरीके का पॉलिसी बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। सो दिस इज द वन थिंग, इसको एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। चलो, आई थिंक EC2 SNS S3 VPC हम लोग कल कवर करते हैं, क्योंकि VPC थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, उसको टाइम लगेगा। और कोर सर्विसेज में और तुमको कुछ जानना है तो बता दो। क्योंकि देखो इसके अलावा अगर हम ऐसे रियल टाइम यूज केस की बात करें तो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस यूज होता है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर्ड है तो RDS हम यूज करेंगे, RDS के अंदर फिर बहुत सारे फ्लेवर्स हैं अलग अलग। अगर नो सीक्वल है तो हम DynamoDB के लिए जाएंगे, ठीक है। अगर कोई मेमोरी डेटाबेस चाहिए तो रेडिस के लिए हम जाएंगे, या मेम कैश के लिए जाएंगे, या इलास्टिक कैश के लिए जाएंगे, समझ रहे। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट हमें कस्टमर को बताना रहता है, या फिर हमें कभी कभी कस्टमर से भी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट मिलती है कि हमें इस टाइप का डेटाबेस चाहिए, प्लीज इंटीग्रेट द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। तो वैसा फिर हम उनको करके देते हैं। So what happens is, see, suppose there are n number of or there are n number of AWS services that needs to be spawned for a particular architecture। कि एक कस्टमर का यूज केस आया, कस्टमर ने बोला कि हमें अपना व्हाट वी कैन से एप्लीकेशन लॉन्च करना है AWS पे, तो आप हमें रेकमेंड करिए व्हाट विल बी द बेस्ट सेट ऑफ सर्विसेज दैट कैन बी यूज्ड और दैट कैन बी लेवरेज्ड फॉर आवर एप्लीकेशन, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें पहले एक छोटा सा POC ले, हमें पहले कस्टमर से जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रोडक्ट का डिटेल हो सकता है वो लेना रहता है। उनका डेटा वॉल्यूम क्या है, उनका एप्लीकेशन कैसे काम करता है, ठीक है। एप्लीकेशन पे क्या क्या डिपेंडेंसी है, ठीक है। किस किस कितने बिजनेस यूजर्स हैं उनके, कितने एंड यूजर्स हैं, कितने इंटरनल यूजर्स उसको एक्सेस करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, हमारा एक अलग सा एक्सेल शीट हमें बनाना पड़ता है, उसमें हमें सारे क्वेश्चनेयर अपने डालने पड़ते हैं, फिर वो क्वेश्चनेयर हम कस्टमर को सेंड करते हैं, फिर ऑन कॉल पूरा डिस्कशन होता है, ठीक है। तो उसमें टाइम लगता है, मीन्स अराउंड 2 to 3 months इन्हीं सब चीज़ों में चल जाता है, पता करने में कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो वो होने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज हमारा POC होता है। तो POC हम इंटरनली करते हैं, ये चेक करने के लिए कि इफ, मतलब अगर कस्टमर का एप्लीकेशन ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट कर रहा है, देन इन दैट केस व्हाट शुड बी द रेकमेंडेड अप्रोच। तो उसमें कुछ कस्टमर रहते हैं जो बोले हमें कॉस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन चाहिए, कुछ कस्टमर बोलते हैं हमें रिलायबल सॉल्यूशन चाहिए, रेजिलियंट सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। कुछ कस्टमर बोलते हैं हमें फॉल्ट टॉलरेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो उसके हिसाब से हमें सेट ऑफ सर्विसेज सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। आज के डेट में मोस्टली कस्टमर्स EKS पे अपने एप्लीकेशंस रन करते हैं, या तो EKS पे जाएंगे, अगर उनके पास ऑलरेडी बिग डेटा का है तो EMR पे वो लोग रन करते हैं, ठीक है। तो उन्हें हमें बताना पड़ता है फिर रिसोर्स कंस्ट्रेंट क्या होगा, क्या नोड ग्रुप होगा, नोड का इंस्टेंस टाइप क्या होगा, किस टाइप के इंस्टेंस फैमिली विल बी प्रेफरेबल फॉर देयर प्रोडक्ट, ये सब रिकमेंडेशन हम देते हैं। So we can only recommend and suggest. We never take the decision. The decision is finally from the customer side. Okay. तो ये चीज होने के बाद फिर हम उन्हें
अपना पीओसी करके दिखाते हैं। तो पीओसी होने के बाद फिर एक सेशन होता है, एंड इन दैट पर्टिकुलर सेशन we show them how exactly your product is going to function with the set of services. If they are convinced, then we move ahead with the uh, deployment of the infrastructure at their end. तो वहां पर भी कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो ये बोलते हैं कि हमें हम अपना डिप्लॉयमेंट खुद कर लेंगे, आप हमें खाली लिस्ट ऑफ सर्विसेज दे दीजिए और रिक्वायरमेंट दे दीजिए। कुछ कस्टमर्स होते हैं जो वो बोलते हैं ठीक है, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एक्सेस, आप हमें डिप्लॉयमेंट करके दीजिए। ठीक है। सो रिमेंबर वन थिंग, वेन एवर जब भी क्लाउड बेस्ड डिप्लॉयमेंट की बात आती है, ठीक है, वी नेवर यूज यूआई, वी नेवर यूज कंसोल, इट्स ऑलवेज फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। ओके। मतलब अभी तक मैंने जितने प्रोजेक्ट्स किए उसमें तो मैंने यही देखा है कि अगर अगर प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर थोड़ा बड़ा है, या फिर कस्टमर तुम्हारे सिक्योरिटी कंप्लाइंट हैं, या फिर उन what we can say organization is big, there are n number of departments, or if there is some resource constraint kind of thing, we always go with the infrastructure as a code logic instead of going with the UI approach. यूआई हम कहाँ पे यूज करेंगे कि ठीक है, एक इंस्टेंस बनाना है अभी तुरंत 2 मिनट में, उसमें किसी तरह की टेस्टिंग किया हमने और उसको डिलीट कर दिया, तो टेस्टिंग के लिए हो गया, या फिर कोई छोटा सा लोड टेस्ट करना है, या छोटा हमें कोई बेंचमार्किंग करनी है ऐसे ही, तो उसके लिए हमने यूआई से कर लिया। बट कस्टमर एंड पे कभी भी हम ना रेकमेंड करते हैं और ना बनाते हैं इस तरीके की चीजें। सो वी प्रोवाइड देम विद द टेराफॉर्म मॉड्यूल, और वी यूज आवर टेराफॉर्म मॉड्यूल टू डिप्लॉय द इंफ्रास्ट्रक्चर एट देयर एंड। ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू इंटीग्रेट ऑल द सर्विसेज, सो दिस इज द वन थिंग। Okay, I'm just going through with all of your questions. कहाँ से स्टार्ट किया जाए, मैं देख रहा हूँ। आपके ओपिनियन से कुछ इम्पोर्टेंट जो रियल टाइम यूज पे, देखो फ्रैंकली स्पीकिंग ना, जो कर रहे हो ना सब रियल टाइम ही है। रियल टाइम जैसा कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो? रियल टाइम मतलब क्या है? मैं वही बताया, जब प्रोजेक्ट की बात आती है ना, तो किस टाइप का प्रोजेक्ट है, नेचर ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। अभी जैसे मैंने एक कंपनी के लिए, एक क्लाइंट के लिए काम किया था, उस उनके पास 3 अलग अलग इन्वायरमेंट है। मान के चलो ठीक है, डेव, टेस्ट और प्रॉड नहीं बोलेंगे उसको, प्री प्रॉड है, क्योंकि उनका उनका जो प्रोडक्ट है वो क्लाइंट एंड पे डिप्लॉय होता है, वो अपने इंटरनल प्रोडक्शन इन्वायरमेंट ऐसा कोई अलग से बना के नहीं रखे हैं। ठीक है। इंटरनली उनका डेव इन्वायरमेंट ही सब हर तरीके से यूज होता है। डेवलपमेंट में ही उनको जो काम करना रहता है वो सारा काम करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट वो ले जाके कस्टमर के प्रॉड में डिप्लॉय कर देते हैं उसको, फंक्शनैलिटी टेस्टिंग करने के बाद। सो इन दिस केस, the caring of the deployment of the infrastructure, or the creation of the infrastructure, the deployment, the creation of the infrastructure is being taken care by the customer itself, or and the deployment, management, monitoring, observability of the product, वो सब हमें करना पड़ता है उनके एंड पे। ठीक है। फोकस किस पे करना चाहिए, क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया, किस चीज के बारे में? What are the core AWS services used by you in your environment? देखो, कोर सर्विसेज में क्या, स्टोरेज आता है, कंप्यूट आता है, नेटवर्किंग आता है, और तुम्हारा सिक्योरिटी आता है। ठीक है, यही कोर सर्विसेज है। अब इनमें तुम जो यूज कर लो, तो इसमें से ऑलमोस्ट ये तो यूज किया ही है मैंने, इसके बाद अलावा तुमको डेटाबेस का सर्विस लगेगा जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। ठीक है। और अभी आज के सिनेरियो में देखूं तो मैं EKS बहुत वाइडली यूज हो रहा है, क्यूबरनेटिस कंटेनर सर्विसेज, जैसे तुम्हारा ECR हो गया, या ECS हो गया, या EKS हो गया। तो पहले ECS यूज करते थे लोग, बट अब वो EKS पे मूव कर रहे हैं, तो ECR और EKS का कॉम्बिनेशन लोग यूज करते हैं। लैम्डा फंक्शन बहुत यूज होता है, बट मोस्टली लैम्डा को हम डेवलपर्स के लिए रखते हैं, हमें लैम्डा फंक्शन में कुछ नहीं करना, हमें उन्हें बस इंटीग्रेट करके देना है। उन्हें चाहिए कि लैम्डा हमारा S3 के साथ काम करे, तो ठीक है, हम इंटीग्रेट करके दे देंगे, बट लैम्डा के अंदर हम कोई फंक्शन नहीं लिखते हैं या किसी तरह का कोडिंग नहीं करते हैं।
ठीक है, इलास्टिक बीन स्टॉक, दैट इज फॉर द वेब एप्लीकेशन, वी आर रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर कॉन्फ़िगरिंग एंड इंटीग्रेशन, बट ये चीज याद रखो, ठीक है। कुछ कंपनी कोशिश करते हैं, मतलब टीम लीड या मैनेजर्स कोशिश करते हैं कि तुम्हें डेवलपमेंट में खींच लें या डेटा साइड में खींच लें, तो वो कहीं ना कहीं हमें बाउंड्री सेट करना पड़ता है, ठीक है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हम जी सर करते हुए हर चीज़ में घुस जाएंगे तो फिर हमारे लिए दिक्कत है, ठीक है। एक साल बाद हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ, मतलब हम दुनिया देख लिया, हमें 10-20 टेक्नोलॉजी हमें पता चल गया, बट एक्चुअल में आता कुछ नहीं है। तो उससे अच्छा है कि 2-3 ऐसे टेक्नोलॉजी पकड़ो और उसके इन डेप्थ जाके उसके कॉम्प्लेक्स यूज केसेस इंप्लीमेंट करो, वो ज़्यादा अच्छा है। एमएस के यूज होता है, काफका, मैनेज काफका यूज होता है, बट अभी तक मतलब मैं उसके अक्रॉस आया नहीं। बट यस, ई केस बहुत यूज होता है, काइनेसिस यूज होता है। सेज मेकर इज फॉर एमएल ऑप्स, यूज करते हैं लोग, तो जहाँ पे एमएल ऑप्स एआई, अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट है या कंपनी है जो प्योर मशीन लर्निंग पे काम कर रही है या एआई का उनका प्रोडक्ट है या प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे सेज मेकर यूज होगा, ठीक है। मोस्टली आजकल लोग डेटा ब्रिक्स भी यूज कर रहे हैं, बिकॉज डेटा ब्रिक्स इज फार मोर चीपर एंड फास्टर देन सेज मेकर, मीन कंप्यूटिंग की जब बात कर रहे हैं हम, तब देखो, क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड टू द क्लाइंट, ये किस, मेरे को इसका कॉन्टेक्स्ट समझना है, किस सेंस में बोल रही हो, इंटरव्यू के सेंस में है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट के सेंस में है, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट के सेंस में ये क्वेश्चन बहुत ये वेग है एक टाइप से, टोटली डिपेंड करेगा किस टाइप का प्रोजेक्ट है, उस पर वेरी करेगा ये सिनेरियो। सीएलआई से या टेराफॉर्म से कोड करके सर्विसेज कैसे ऑपरेट करें, सर्विसेज कैसे ऑपरेट करें एंड डू वी नीड टू लर्न कोडिंग फॉर द सेम। देखो, कोडिंग इन द सेंस मतलब क्या, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर साइड हैं तो हमें पता होना चाहिए कि टेराफॉर्म से इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डिप्लॉय किया जाता है। ये आज के डेट में 90% एक्सपेक्टेशन है किसी भी कंपनी का। तो कहीं भी तुम बोलोगे कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर हैं या प्लेटफॉर्म इंजीनियर हैं या क्लाउड इंजीनियर हैं, दे विल एक्सपेक्ट दैट यू नो हाउ टू राइट अ टेराफॉर्म मॉड्यूल फॉर डिप्लॉइंग एनी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन एनी क्लाउड रिसोर्स, ठीक है, पहला चीज ये। सी एल आई भी कॉमन टूल है, सी एल आई के कमांड्स पता होना चाहिए, बेसिक कमांड्स, तो जो भी सर्विसेज, इसीलिए बोला, तो जो भी सर्विसेज यूज कर रहे हो, तो जो भी कोर सर्विसेज जैसे S3 हो गया या EC2 हो गया, तो इनके जो भी बेसिक सी एल आई कमांड्स हैं या जो भी ऑपरेशन तुम यूआई से कर रहे हो उसको एक बार CLI से करके ट्राई करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में तुमसे ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, कमांड कोई नहीं पूछता, उनको सब पता है कि डॉक्यूमेंट है, वहां से कमांड निकाल के हम रन कर सकते हैं, बट लॉजिक पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, कौन सा कमांड रन करना है वो चीज पता होना चाहिए, तभी तो कॉपी करोगे उसको। दैट्स द होल स्टोरी, ठीक है। इंस्टेंस फैमिली कैसे डिसाइड करते हैं, वो रिसोर्स का पूरा डेटा वॉल्यूम का कहानी है, ठीक है, किस टाइप का एप्लीकेशन है, किस टाइप का रिसोर्स, किस टाइप का इंजेक्शन हो रहा है, या किस टाइप के यूजर्स उसको एक्सेस करेंगे, कितने यूजर्स एक्सेस करेंगे, उस पर पूरा कहानी चलता है इंस्टेंस फैमिली का। तो उसके हिसाब से हम उनको बताते हैं कि कंप्यूट लेना है, स्टोरेज लेना है, मेमोरी लेना है, जनरल पर्पस लेना है, ठीक है। अब तो जीपीयू ऑप्टिमाइज भी आ गए, तो वैसा है सीन। देयर इज नो नथिंग फिक्स्ड आंसर फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस, पूरा का पूरा सिनेरियो बेस्ड और यूज केस पे, तो हमें पहले यूज केस अच्छे से समझना रहता है, उसमें भले जितना टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक क्वेश्चन को 10 बार भी पूछ सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है, बट एक काम को 2 बार करने में ना अखर जाती है, इसलिए सो डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ योर मैनेजर और विथ योर टीम और इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट, मैं तो ये बोलूंगा, ठीक है, कोई नहीं देख रहा वहां पे, अब कहीं ऐसे कोई इज्जत नहीं जाती हमारी पूछने में। What are the questions should be asked to client, need assessment, can teach EMR? यूट्यूब में वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे EMR के, एक बार ट्राई करके देखो कितना क्यूबरनेटिस आना चाहिए। देखो वो डिपेंड करेगा तुम्हें
किस टाइप के रोल के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, अगर मतलब तुम्हारा किस डेजिग्नेशन या किस प्रोफाइल के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, उस पर पूरा कहानी टिका है कि कौन सा सर्विस तुमको कितना आना चाहिए। बट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन और डिप्लॉयमेंट खाली पता होना चाहिए, अगर एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर या प्लेटफॉर्म इंजीनियर तुम के लिए तुम जा रहे हो तो। ठीक है। What are what are services that are basically used as a security purpose, authorization purpose in cloud? देखो, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की जब बात करें ना, तो आईएएम के सारे वहाँ पे तुम्हारे क्या बोलते हैं सर्विसेज है ना, मोस्टली यूज हो जाते हैं। तो चाहे वो तुम्हारा इंस्पेक्टर हो, या तुम्हारा गार्ड ड्यूटी हो, या तुम्हारा वेब एक्सेस फायरवॉल हो, सब सिनेरियो बेस्ड है। और उनका हर अलग अलग अपना अपना जगह यूज है। हर पर्टिकुलर सर्विस के कुछ प्रॉपर्टीज है जो उसको स्पेसिफिक बनाते हैं। ठीक है, एक सर्विस है जिसको हम डीडोस अटैक से प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं। एक सर्विस है जो हमें मैलिशियस अटैक से बचाता है। एक सर्विस है जो हमें क्या बोलते हो फ्लडिंग ऑफ आईपीज जो होते हैं ना, उससे प्रोटेक्ट करता है। एक सर्विस है जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की वनरेबिलिटीज या एप्लीकेशन की वनरेबिलिटीज निकाल के देता है। तो हमारा रिक्वायरमेंट का क्या है, हमें किस लेवल पे सिक्योरिटी को ले जाके इम्प्लीमेंट करना है, कहानी पूरी उस पर टिकती है। ठीक है, उसके हिसाब से हमें देना पड़ता है। एडमिन रोल का स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइजेशन, देखो एडमिन रोल के स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। एडमिन रोल मतलब किस किस टाइप, कौन से एडमिन की बात कर रहे हो, पहले ये बताओ मेरे को। मतलब बिग डेटा एडमिन है या फिर क्लाउड एडमिन है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैटर देन डेजिग्नेशन। क्लाउड एडमिन। एक मिनट देना मेरे को। क्यूबरनेटिस नॉलेज एज क्लाउड एडमिन, डिप्लॉयमेंट पता होना चाहिए। ईकेएस कमांड लाइन से हम कैसे डिप्लॉय करते हैं, और यूजिंग टेराफॉर्म हम कैसे डिप्लॉय करते हैं। उसमें नोड ग्रुप कैसे असाइन करते हैं, कितने टाइप के नोड ग्रुप होते हैं। ठीक है, नोड ग्रुप का अगर हम ऑटो स्केल करना चाहें तो कैसे होगा। कुल मिला के ईकेएस के प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि जब तुम ईकेएस के यूआई पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशनल पैरामीटर्स आते हैं। ठीक है, हमें क्यूबरनेटिस का वर्किंग नहीं जानना है। ठीक है, अंदर एप्लीकेशन कैसे रन करता है, पॉड कैसे बनता है, उससे मतलब नहीं है। बट ईकेएस के कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होने चाहिए एज अ क्लाउड एडमिन। एस टी एस तुम्हारा सर्विस टोकन हो गया, जो टेम्परेरी क्रीडेंशियल प्रोवाइड करता है और टेम्परेरी एक्सेस के लिए यूज होता है। तो सपोज करो कोई एक यूजर है जो एडब्ल्यूएस का नहीं है, और उसको तुम्हारे एप्लीकेशन का एक्सेस चाहिए। ठीक है, अब तुम्हारे एप्लीकेशन का कोई फ्रंट एंड नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, हम एक अज्यूम रोल असाइन करते हैं। ठीक है, तो जब भी अज्यूम रोल होता है तो बैकग्राउंड में एक एस टी एस जनरेट होता है। ठीक, एंड दैट एस टी एस प्रोवाइड्स एक्सेस की आईडी, सीक्रेट की आईडी वैलिडिटी विद वैलिडेशन पीरियड। ठीक है, उसका वैलिडेशन टाइम रहता है कि इतना देर के लिए ही ये एप्लीकेबल रहेगा। दैट इज व्हाट एस टी एस इज ऑल अबाउट। क्लाउड एडमिन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देर इज एनी कोर सर्विसेज फॉर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए कोर सर्विसेज, देखो आईएम ही है। आईएम ही इतना वास्ट है ना, उस पे ही करना मतलब सफिशिएंट है। अगर तुम वाकई देखो जॉब सर्च कर रहे हो तो फिर आईएम बहुत है। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब में हो तो फिर और चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मैं तो बोलूँगा, रुको तुमको मैं इस यूआई एक बार देखते हैं। इसमें और क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं।
इसमें से देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, जैसे ये सिक्योरिटी आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस में जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये तुम्हारा एक सर्टिफिकेट मैनेजर है जिसमें हम टीएलएस और एसएसएल के सर्टिफिकेट्स रखते हैं। ठीक है। फिर डायरेक्टरी सर्विसेज हम यूज़ करते हैं एडी के लिए। फायरवॉल मैनेजर अभी तक मतलब मैंने देखा नहीं है बट सुना है यूज़ करते हैं इसको। गार्ड ड्यूटी नहीं, आईएम तो हो गया, आईएम तो कॉमन है। आई आईएम आइडेंटिटी सेंटर ये एक न्यूली ऐड हुआ है। इसको देखना पड़ेगा, मतलब अभी तक किसी प्रोजेक्ट में मैंने देखा नहीं इम्प्लीमेंट हुए। इंस्पेक्टर हम यूज़ करते हैं वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करने के लिए विद इन पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस, मतलब तो एक तरीके का मतलब एजेंट इंस्टॉल करना पड़ता है हर EC2 इंस्टेंस में जहाँ भी हमें इंस्पेक्टर चलाना रहता है। केएमएस यूज़ होता है बहुत फ्रिक्वेंटली। ठीक है। मेसी नहीं पता, ये इसके लिए शायद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकालने के लिए रहता है। S3 में सपोज करो कोई डेटा रखा हुआ है और उसमें से हमें ईमेल आईडी और SSN नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, ये सब निकालना रहे तो उसके लिए शायद ये यूज़ होता है। बट दैट टोटली डिपेंड, मतलब अगर ML ऑप्स का ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है, एआई का प्रोजेक्ट है, तो उस केस में फिर ये यूज़ होगा, नहीं तो नहीं। प्राइवेट सर्टिफिकेट अथॉरिटी नहीं, ये नहीं यूज़ होता। रिसोर्स मैनेजर, सीक्रेट मैनेजर यूज़ होता है फिर सीक्रेट्स रखने के लिए। और वेब एक्सेस फायरवॉल यूज़ होता है एंड शील्ड, डीडोस अटैक से प्रिवेंट करने के लिए। आई थिंक दीज आर द ओनली सर्विसेज जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसमें। इनमें से भी अगर सबसे ज़्यादा जो है वो है तुम्हारा एक सर्टिफिकेट मैनेजर है, तुम्हारा एक KMS है, IEM हो गया, सीक्रेट मैनेजर हो गया, बस ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चलो आओ वापस क्वेश्चन पे आते हैं। AWS सर्विसेज एज बिग डेटा एडमिन। हाँ, तो कोर सर्विसेज पता होना चाहिए, उसके साथ अगर EMR कर लोगे तो अच्छा है। ठीक है, क्योंकि आजकल माइग्रेशन का बहुत चल रहा है प्रोजेक्ट, और सो दे आर लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स हु हैव नॉलेज ऑन EMR। तो मतलब मैं देखा है मैंने अभी, ऐसे जैसे हम हमारा ही प्रोडक्ट है या फिर मेरे ये जो कंपनी है उसका जो प्रोडक्ट है वो पूरा EMR पे ही डिप्लॉय होता है। ठीक है, तो उनको वैसे बंदे चाहिए जिनको EMR का नॉलेज हो। तो एक EMR एडिशनल सर्विस यूज कर सकते, ऐड कर सकते हो अपने रिज्यूमे में अदर देन द कोर सर्विसेज। और एक डेटाबेस का कोई सर्विस ऐड कर लोगे तो वो अच्छा है, मतलब जैसे RDS हो गया। और RDS में से जैसे माई सीक्वल का एक फ्लेवर यूज करके उसमें एक डेटाबेस बना के देख लो, खाली करते कैसे हैं। ठीक है, फ्रॉम एडमिन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एक अगर अपने को डेटाबेस बनाना है तो वो कैसे बनेगा। माई सीक्वल को जब हम क्रिएट करते हैं उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, ऑटोमेटेड बैकअप है कि नहीं है उसके अंदर, और क्या वो मल्टी एजी प्रोवाइड करता है। ठीक है, RDS प्रोवाइड करता है बट RDS के सारे फ्लेवर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। RDS के अंदर जो सारे ऑप्शंस हैं वो सब मल्टी एजी स्पेसिफिक नहीं होते हैं, तो वो चीज़ हमें चेक करना रहता है। सीक्रेट मैनेजर टू सिक्योर डेटाबेस, हाउ मेनी सर्विसेज वी नीड टू मास्टर, ऐसा कुछ नहीं है मास्टर के लिए। मैं बोला खाली कोर सर्विसेज कर लो। कंप्यूट हो गया, नेटवर्क हो गया, स्टोरेज हो गया, और सिक्योरिटी हो गया। तो कंप्यूट में EC2 आ गया तुम्हारा, स्टोरेज में S3 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा EFS देखना तो देख सकते हो। और नेटवर्किंग में VPC हो गया, और सिक्योरिटी में IEM हो गया। इतना काफ़ी है घुसने के लिए। अंदर जाने के बाद तो फिर द वर्ल्ड इज योर्स, जितना पढ़ना पढ़ लो। व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट करंट सिचुएशन अबाउट क्लाउड एंड Hadoop ऑर्गेनाइजेशन और माइग्रेटिंग टू क्लाउड। सो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आज के डेट पे क्लाउड पे माइग्रेट हो रहे हैं। ठीक है, अभी एक दो प्रोजेक्ट मेरे को सुनने में आया है जहाँ पे ट्रांजिशन उल्टा हो रहा है, मतलब दे आर मूविंग फ्रॉम क्लाउड टू ऑन प्रेम। ठीक है, तो बट 90% ऑफ द थिंग इज ऑन क्लाउड। तो जो भी एप्लीकेशंस हैं
जो ऑलरेडी ऑन प्रेम पे रन कर रहे हैं या फिर उनके इंडिविजुअल प्राइवेट डेटा सेंटर पे रन कर रहे हैं, वो सब के सब तुम्हारे क्लाउड पे मूव कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आज के डेट में ऐसा हो गया कि द बेस इज क्लाउड, यू नीड टू हैव द क्लाउड नॉलेज, और ऑन टॉप ऑफ दैट यू कैन शो योर स्किल सेट। मतलब ठीक है, उसके ऊपर हमें हडूप आता है, उसके ऊपर हमें कुबरनेटिस आता है, या फिर उसके ऊपर हमें डेटाबेस आता है, कुछ भी आता है, बट एज अ बेस दे आर एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड हैव क्लाउड नॉलेज। मैं कल रियल टाइम इश्यूज दिखाता हूँ तुमने को, इश्यूज नहीं, मैं रियल टाइम यूज केस बताऊंगा मैं तुम्हें कल, तुम लोगों को कल आर्किटेक्चर दिखाता हूँ अपने कंपनी का, मतलब कंपनी के प्रोडक्ट का। और बट आई ट्राई टू, उनका नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा मेरे को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मैं दिखा नहीं सकता, पता चला कौन कहाँ स्क्रीनशॉट ले लेगा, दिक्कत हो जाएगा मेरे को। In Cloudera project, we are using, we have to also use cloud services for the, वो पूरा तुम्हारा क्लाउड पे डिपेंड करेगा, और जो तुम्हारे प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगा कि तुम्हें क्लाउडेरा का प्रोजेक्ट के साथ क्लाउड के सर्विसेज यूज करने हैं कि नहीं करने। ठीक है। द रिकमेंडेशन दैट नीड्स टू बी कम फ्रॉम योर मैनेजर साइड। सर मुझे सर मुझे माइग्रेशन का प्रोजेक्ट करना है, बट एज एडमिन और इंजीनियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डीएमएस और एमजीएन मेन सर्विसेज है। हाँ तो ठीक है ना, तो उसमें इंटीग्रेशन का देख सकते हो ना, डीएमएस और एमजीएन कैसे काम करते हैं। ठीक है, उसमें एक छोटा सा पीओसी करके देख सकते हो, बट इंटरनली नहीं घुसना है उसमें कि डेटाबेस बना रहे हैं, फिर अब डेटाबेस के अंदर हम टेबल स्कीमा सब बना रहे हैं बैठ के। ठीक है, वो सब डेटाबेस इंजीनियर वालों का काम है। ये लोग हमसे भी काम करवाने की ट्राई करते हैं, बट वहाँ पे हमें रेस्ट्रिक्शंस डालने रहते हैं। व्हाट्स द रीजन टू मूव फ्रॉम ऑन प्रेम टू क्लाउड? एन नंबर ऑफ रीजंस हैं, इस पे तुम्हारा डेमो लेक्चर भी हुआ होगा, समझे। इन प्रोडक्शन विच इंजन इज यूज्ड ऑन टॉप ऑफ आरडीएस, माई सीक्वल और ओरेकल? देखो आरडीएस ही यूज करते हैं, तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का जो सीक्वल सर्वर आता है, ज़्यादातर वो प्रेफर करते हैं। या फिर देखो, एक दो दो तीन प्रोजेक्ट मैंने देखे हैं जहाँ पे पोस्टग्रेस भी लोग यूज किए हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट था जहाँ पे ओरेकल का यूज किए हैं। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंपैटिबिलिटी। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका, मतलब जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनका उनके जो टीम मेंबर्स हैं वो बहुत कंफर्टेबल है पोस्टग्रेस में काम करने के लिए, वो शुरू से पोस्टग्रेस पे ही काम करते हैं, तो वो पोस्टग्रेस डिप्लॉय कर देते हैं। उनको बोलते हैं कि हमें पोस्टग्रेस चाहिए। कोई सीक्वल में एक्सपर्ट होते हैं तो उनको सीक्वल चाहिए, कोई कोई ओरेकल, किन्हीं को ओरेकल बहुत अच्छा अच्छा आता है, तो उन्हें ओरेकल चाहिए रहता है। तो इसका ऐसा कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, पूरा का पूरा वो डिपेंड करेगा कहानी क्या है। I have graduated in year 21. I want to show 1.30 years of experience. Which profile should I apply in? Oh, this you needs to discuss from your mentor once. ठीक है, क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुमने किस टाइप की पढ़ाई की है, तुम अभी किस चीज़ में एक्सपर्ट हो, तुम्हें क्या आता है, उस पे पूरा कहानी बनेगा कि तुम्हें किस टाइप का प्रोफाइल दिखाना है, उसके अंदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दिखानी है। ठीक है, ऐसे मैं नहीं बता पाऊंगा। व्हाट इज ईएमआर माइग्रेशन? ये देखना पड़ेगा, पता नहीं, इसका आइडिया नहीं है। आई डोंट वर्क ऑन सीडीपी currently. Some of the e-commerce projects, are they using Hadoop and cloud both? How is the सिनेरियो? हाइब्रिड इन्वायरमेंट होते हैं ना, अभी जैसे हमारे प्रोडक्ट है तो वो हडूप में भी डिप्लॉय होता है और क्लाउड में भी डिप्लॉय होता है। तो पूरा का पूरा बैकग्राउंड इंटीग्रेशन का खेल रहता है। ठीक है, प्रोडक्ट तुम्हारा कितना कंपैटिबल है क्लाउड सर्विसेज से बात करने के लिए और हडूप इन्वायरमेंट से बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी टूल्स भी बीच में आते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इंटरनल टूल्स भी हमें डेवलप करना पड़ता है, इन मीन्स इफ यू वांट टू अचीव सच ऑब्जेक्टिव्स। देखो, तुम भले 1 साल का एक्सपीरियंस शो करो, और या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस शो करो एडब्ल्यूएस में, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज यू शुड नो कोर सर्विसेज।
ठीक है, कोर सर्विसेज मतलब उसको अगर सरल भाषा में समझो ना, तुमको कंप्यूटर चलाने आना चाहिए बस। ठीक है, एक डब्बा है, डब्बे के अंदर स्टोरेज है, उसके अंदर रैम है, उसके अंदर क्या बोलोगे, उसके अंदर डिस्प्ले है, उसके अंदर तुम्हारा प्रोसेसिंग पावर है। तो उस वही सेम चीज को तुम जब क्लाउड में ले जाते हो, तो वहां पे क्लाउड में ऐसे कौन कौन से सर्विसेज है जो उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो तुमको पता होना चाहिए। स्टोरेज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्यूट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, नेटवर्किंग को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सिक्योरिटी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुल मिला के बस इतना एक्सपेक्टेशन किसी भी क्लाउड एडमिन या फिर क्लाउड इंजीनियर से रहता है कि दे शुड नो द कोर सर्विसेज। तो क्वेश्चन देखो इंटरव्यू में आजकल ना, कोर सर्विसेज को छोड़ के आते हैं, या फिर वो इन डेप्थ घुसेंगे कोर सर्विसेज में, अगर घुसना रहा तो, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि तुम्हें इतना आता है। ठीक है, दिस इज बट एक्सपेक्टेड। तो वो तुम्हारे आंसर्स में पता चल जाता है तुम्हें वो चीज आता है कि नहीं आता है। अरोरा यूज हो रहा है, हाँ अरोरा यूज होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, बट अरोरा के साथ थोड़ा कॉस्टिंग का इशू है। तो ज़्यादातर क्लाइंट का रहता है कि हमें कॉस्ट ऑप्टिमाइज आर्किटेक्चर चाहिए, तो जल्दी वो अरोरा पे जाते नहीं। बट अगर जहाँ रिलायबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंट की बात आती है, वहाँ पे हाँ अरोरा ही बेस्ट है ऑप्शन। रियल टाइम में प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन और सर्विस रिलेटेड कोर सर्विसेज, ठीक ठीक ठीक, हाउ टू गेट कुबरनेटिस रियल टाइम एक्सपीरियंस, करंट मार्केट फॉर कुबरनेटिस। क्यूबरनेटिस रियल टाइम एक्सपीरियंस काम करके ही आएगा। दो चार मतलब जब भी क्यूबरनेटिस पढ़ लो, तो जो भी तुम्हारे जो भी मेंटर्स हैं क्लाउड एज में, उन्हें तुम कांटेक्ट कर सकते हो। दे कैन प्रोवाइड यू सम यूज केसेस दैट यू कैन ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑन योर एंड। ठीक है, उससे तुम्हें बहुत सी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल सकता है, और सेम यूज केस में तुम इन डेप्थ जा सकते हो। ठीक है, उसमें तुम सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स लगा सकते हो, उसको तुम किसी थर्ड पार्टी ऐप, ओपन सोर्स ऐप के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, उसमें तुम मॉनिटरिंग सेट कर सकते हो, उसमें अलर्टिंग सेट कर सकते हो। तो एक किसी भी यूज केस को इम्प्लीमेंट करके अगर उस पर एक्सपैंड करोगे और एक्सप्लोर करोगे ना, वही तुम्हारा रियल टाइम यूज केस बन जाएगा। और उसी को तुम बोल सकते हो कि सपोज करो तुमने स्पार्क को ही क्यूबरनेटिस क्लस्टर पे रन कर लिया, या फिर तुमने काफका का क्यूबरनेटिस क्लस्टर बना लिया और उस पर फिर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट कर दिए, उसको फिर प्रोमीथियस या ग्राफाना के साथ इंटीग्रेट कर दिया, या फिर उसके जो भी लॉग्स जनरेट हो रहे हैं वो तुमने कोई S3 बकेट हो गया, या फिर या कहीं तुम क्या बोलोगे, डायनमो डीबी की टेबल्स हो गए, या फिर रेडिस हो गया, वहाँ पे अगर तुम उसको स्टोर करवा सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो। तो वैसा है, मतलब कोई एक मेंटर को पकड़ो, वो तुम्हें गाइड कर सकते हैं इन सब चीज़ों पे। डॉगर कंटेनर्स प्रेफर्ड, यस, कैन यू प्लीज कवर ऑन कंटेनर। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, ऑन प्रेम टू क्लाउड माइग्रेशन यूजिंग AWS माइग्रेशन सर्विसेज। ये टाइम टेकिंग है, ये इतने टाइम कम टाइम में नहीं होने वाला। 1.5 ईयर्स ऑफ ग्लो एक्सपीरियंस को वैल्यू अपॉर्चुनिटीज है क्या क्लाउड में एंट्री के लिए? और देखना पड़ेगा। 1.5 ईयर्स होना चाहिए, मार्केट एक्सप्लोर करके एक बार देखो थोड़ा, क्योंकि अभी इधर सुनने में आया था मेरे को फ्रेशर्स की भी बहुत हायरिंग हो रही है। तो इन दैट केस दे कैन, this 1.5 years of experience can easily be counted. What are the roles of cloud admin? देखो, क्लाउड एडमिन के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तुम्हें ऐसे भी गूगल करोगे तो मिल जाएंगे बहुत सारे, समझे। तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करने आना चाहिए, तुम्हें मैनेज करना आना चाहिए, तुम्हें मॉनिटरिंग करने आना चाहिए, तुम्हें ट्रबल शूटिंग करने आना चाहिए। ठीक है, तुम्हें इंटीग्रेशन करने आना चाहिए, कि सपोज करो मैं बोला कि मुझे इलास्टिक सर्च के साथ EC2 इंस्टेंस को इंटीग्रेट करके दे दो। ठीक है, या फिर EC2 में मेरा एक एप्लीकेशन रन कर रहा है, हम चाहते हैं कि उसे इलास्टिक सर्च के साथ इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, इलास्टिक सर्च तुम्हारा एक क्या बोलते हैं, ETL स्टैक का एक पार्ट है। ठीक है, एक एप्लीकेशन है जो तुम्हारा ETL के लिए यूज होता है, जहाँ पे हम लॉग को एक जगह कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसको डैशबोर्ड पे, किबाना के डैशबोर्ड पे शो करते हैं। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, या फिर अगर सपोज करो वो ऐसा बोलेंगे तुम्हें
क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन करना है, या तुम्हें ऑटोमेटेड स्नैपशॉट बनाना है कि उनके 15 से 20 मतलब 100, या फिर हाँ 15 से 20 EC2 इंस्टेंस चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर वीकेंड में या फिर हर 2-3 दिन में उनका स्नैपशॉट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। ठीक है। दे डोंट वांट टू गेट इट क्रिएटेड मैनुअली। तो उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा और उसे तुम्हें वाया जेनकिंस या फिर किसी क्रॉन जॉब के थ्रू चलाना पड़ेगा। क्लाउड सिक्योरिटी देखो वास्ट फील्ड है। इसमें मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस तो वो खोजते हैं। ठीक है। ये देखो क्लाउड सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट तभी कर पाओगे जब क्लाउड का नॉलेज अच्छा खासा है। तभी तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पे लूप होल्स आ सकते हैं और कहाँ पे हमें सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए एक्सपीरियंस लगता है, मिनिमम 5 इयर्स तो खोजते हैं वो, जहाँ तक मेरे को सुनने में आया अभी। So if I give some defense use case for cloud, and what are the major requirements of defense organization from cloud environment? डिफेंस अभी तक यार ऐसा कोई क्लाइंट मिला नहीं जो डिफेंस के लिए कोई प्रोजेक्ट करता हो। ठीक है, बट इसको तुम किसी भी, क्या बोलोगे, इंश्योरेंस या फार्मास्यूटिकल के साथ रिलेट करके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड बहुत हाई रहेंगे। ठीक है। बट ये चीज़ देखना पड़ेगा, एक बार गूगल पे ट्राई मार के देखो, नहीं तो होगा तो फिर बताना मेरे को। वीकली बैकअप, AWS बैकअप वीकली बैकअप के लिए ले सकता है। देखना पड़ेगा, ये मैंने ट्राई नहीं किया कभी। आई थिंक दैट्स इट। आई थिंक वी आर ऑन टाइम। सो व्हाट विल बी डूइंग टुमारो? कल हम लोग सबसे पहले वो यूज़ केस देखते हैं जो मेरे कंपनी में इम्प्लीमेंट होता है और डिप्लॉइंग आवर प्रोडक्ट। तो यूज़ केस इन द सेंस आई विल शो यू द आर्किटेक्चरल डायग्राम, हाउ डज द product diagram looks like with AWS, what all the services are involved with, how we interact with those services. ठीक है। एंड VPC, VPC थोड़ा बहुत देख सकते हैं, VPC का थोड़ा सा इन डेप्थ जाके देखते हैं VPC में हम क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तुम लोग को तो बताना मेरे को, कल उसको रिजॉल्व करते हैं फिर बैठ कर, जितना भी होगा डिस्कशन करके, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है मेरे साइड से मैं बता दूंगा। हाँ कल VPC बताता हूँ मैं, चलेगा। माय नेम इज हर्षवर्धन उपाध्याय। ओके चलो गाइस, थैंक यू। थैंक यू ऑल, टेक केयर एंड सी यू टुमारो। क्लोजिंग। ओके चलो, बाय, टेक केयर, थैंक यू।